चलो, so we studied about two things, myopia and hypermetropia we studied. Okay, now we'll go for the presbyopia. Third one defect is presbyopia. Presbyopia is occur due to the old age में occur होगा ये presbyopia. I told right, ciliary muscles always relax contract कितना साल तक करेगा, some साल के बाद it will be थोड़ा loosen हो जाएगा वगैरह. So that's why this defect will arise, old sightedness. Okay, so लिखो, it is a defect of vision due to which an old person cannot see the nearby objects clearly due to loss of power of accommodation of the eye. Due to loss of power of accommodation of eye की वजह से he cannot able to see. मतलब उसका नियर पॉइंट विल चेंज, 25 सेंटीमीटर्स नहीं रहेगा, थोड़ा दूर रखना पड़ेगा. ओके, the near point of the old person having presbyopia gradually resides and becomes much more than 25 centimeters. 25 सेंटीमीटर्स से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. दैट्स व्हाई ओल्ड पीपल ऐसा ऐसा रखेगा, पीपल दूर रखेगा. जेल मतलब 25 सेंटीमीटर्स में नहीं आएगा, उसको थोड़ा दूर हो जाएगा. एंड उसका कॉज क्या है? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सीएलरी मसल्स, वीकनिंग हो जाएगा सीएलरी मसल्स. एंड दूसरा डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, आई लेंस उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा. ओके तो इसका करेक्शन क्या होगा? हाउ टू करेक्ट दिस प्रेसबायोपिया पर्संस का, हाउ टू करेक्ट? बाइफोकल लेंस. ओके, ऐसा नहीं है इट्स नॉट ए रूल दैट बाइफोकल लेंस होगा, बट जनरली अगर नॉर्मली ए साइटेडनेस को कॉन्वेक्स लेंस से ही करेक्ट कर सकते हैं. बट समटाइम्स दोनों होगा तो, नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस दोनों अगर होगा तो देन वी कैन फाइंड बाइफोकल लेंस. डन. ओके, चलो. करेक्शन ऑफ प्रेसबायोपिया, यूज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर. पर प्रेसबायोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे. ओके, समटाइम्स ए पर्सन में सफर बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों सफर होगा. दैट टाइम क्या यूज करने वाला है? बाइफोकल लेंस यूज करने वाला है. अपर लेंस एंड लोअर लेंस विल बी देयर, राइट? अपर लेंस कौन सा यूज करेगा, लोअर लेंस कौन सा यूज करेगा? ओल्ड पीपल देगा होगा ना, एक लाइन रहेगा, ऊपर एंड नीचे रहेगा, दोनों रहेगा. सो अपर लेंस कौन सा यूज करेगा? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? अपर लेंस. पेपर पढ़ने से हमें नजदीक में तो नजदीक का दिखने का, दूर का दिखने का ना. सो दैट्स व्हाई ऊपर का ऑलवेज कॉनकेव, द अपर पोर्शन इज कॉनकेव लेंस एंड लोअर पोर्शन इज कॉन्वेक्स लेंस.
लिखो. Done. Born लिख दिया. हो गया. Finish. Yes. Okay. Now these are the defects of the 3 defects. Okay. One more defect is there. Like this is actually old time tha, but maybe बोल के दे बोल रहा हूँ. This is not there in textbook में NCERT में. Okay. Astigmatism. Okay. What is meaning of astigmatism? Anybody? Astigmatism. Oh. अभी नाम बोला ना astigmatism. Okay. Tell me. Akarsh. Sir, is irregular shape of the lens or the cornea. हाँ कॉजेस नहीं है असल उसका क्या है उसको कैसे दिखेगा. So the vision will be blurred. नहीं नहीं ऐसा नहीं है. देखो what will happen is a person suffering from this defect cannot see in all directions equally. That is, he cannot see vertical and horizontal lines simultaneously. Suppose आप graph paper उसको दिखाया, the person who is suffering from this one, he can see either these lines or either these lines, but simultaneously he cannot see दोनों लाइन. ये बोलेगा कि ग्राफ पेपर आधा दिया क्या है, ये लाइंस नहीं है बोलेगा. फिर से दूसरा पर्सन ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है बोल के बोलेगा. उसको करेक्शन स्पेस लगाए तो हाँ अच्छा है ग्राफ पेपर अच्छा है बोल के बोलेगा. ओके. दिस अ पर्सन. ओके. लिखो. ये क्यों है? कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस और बोथ आर नॉट परफेक्टली स्फेरिकल. अगर नहीं है तो दिस. विराज निकाल दो, बैकग्राउंड निकाल दो, अच्छे से बनाओ. विराज नॉर्मल बनाओ. भाई बैकग्राउंड क्यों लगा रहे हैं? करेक्शन. करेक्शन क्या है इसका? वी हैव टू यूज सिलिंड्रिकल लेंसेस. सिलिंड्रिकल लेंसेस वी हैव टू यूज. ओके. फॉर करेक्शन. सिलिंड्रिकल लेंस बोल तो एक बड़ा सिलेंडर लगा के यो ऐसा नहीं है. ओके. एक इस लेंस के ऊपर इमेज आएगा, एक सिलिंड्रिकल लेंस का इमेज आएगा दैट नॉर्मल पर्सन कैन नॉट सी. मतलब उसे ऐसे क्या है बोल के. ओके. शेप नहीं है उसका, पिक्चर ऊपर आएगा उसको सिलिंड्रिकल लेंस का. ओके. लिखो. कॉपी. So this is there in the textbook. No, not there in textbook. Okay. Can I ask But him- extra information learn करो. हो Okay. जाएगा.
Sir, हम्म what are toric lenses? हाँ Toric lenses, something. ये समथिंग मत बोलो, ओ क्या वर्ड कुछ है समथिंग बोलो. This one only when I was like I saw last year का textbook I was using. लास्ट ईयर को फेंक दो फर्स्ट, न्यू बुक न्यू को बोल लो. But when I was reading that. सिद्धार्थ ऑन द वीडियो. हाँ ये हाथ दिया ऑन द वीडियो. हाँ हो गया कवर. चलो नो, लास्ट में इज कैटरैक्ट. कैटरैक्ट ये तो सुना होगा ना बहुत बार, कैटरैक्ट आया बोल के. व्हाट इज कैटरैक्ट मींस सेकंड टू एनीबॉडी? विराज, कैटरैक्ट मींस मालूम है? Sir, कैटरैक्ट blurring of your vision or cloudiness. हाँ क्लाउडी हो जाएगा, वाइट कलर पूरा बन जाएगा क्लाउडी. ओके उसके वजह से क्या होगा, पार्शियल विजन और कंप्लीट विजन चले जाएगा. सो पहले आइडेंटिफाई किया तो देन ओनली उसको कुछ कर सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, वो निकाल के स्टार्टिंग में दिखाया ना आई बॉल लेंस का, वो फिर से लगाना पड़ेगा, पूरा आई पूरा चेंज करना पड़ेगा कैटरैक्ट. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी डेंजरस वन. Okay, sometimes the crystalline lens of the people becomes milky and cloudy. This condition is called cataract. तो पूरा white color हो जाएगा. This cause partial or complete loss of vision. It is possible to restore vision through cataract surgery. Surgery करना पड़ेगा, cataract surgery. Done? Yeah. चलो. See? कैटरैक्ट में पूरा क्लाउडी हो जाएगा, इतना व्हाइट कलर हो जाएगा, देखो पूरा इतना व्हाइट हो जाएगा. इफ यू सी इन ए क्लाउडेड लेंस, लेंस पूरा पूरा व्हाइट कलर बन जाएगा. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. सो फर्स्ट ओनली दे शुड बी आइडेंटिफाइड, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा सर्जरी करना पड़ेगा. ओके चलो, नाउ विल टॉक अबाउट प्रिज्म. सो पूरा ह्यूमन आई पूरा खत्म हो गया. नाउ वी आर एंटरिंग टू कलरफुल वर्ल्ड. ये पूरा थियरिटिकल है एक्चुअली, ये पूरा थियरिटिकल है ये वाला. आपको टेक्स्ट बुक से एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ेगा तो आ जाएगा सब कुछ. Sir, इसी में आपको, हाँ बोलो. sir, do we have to draw the eye diagram? नहीं, कौन सा फर्स्ट वन डायग्राम यू टेलिंग? No, yeah, the big one. First. आउटर डायग्राम लर्न बिकॉज आपको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में आउटर डायग्राम लर्न कर रहे हो तो Outer diagram is no like हाँ. the inside labeling and all. नहीं कुछ नहीं, नो नीड, दे विल नॉट आस्क. ओके सो ह्यूमन इज डन. कलरफुल वर्ल्ड वी आर सीइंग, उसका रिफ्रैक्शन के बारे में लर्न करने वाला है. ओके ये पूरा टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ने का आई विल एक्सप्लेन. ओके प्रिज्म देखा होगा ना लैब्स में वगैरह में, प्रिज्म. ओके सो विच शेप प्रिज्म विल बी?
Prism which shape? देखा बोल रहे थे? हाँ हाँ Triangular. all triangles only, triangle shape. No, Oh, they can front view you're telling. Front view is triangular. But if you see in the other shape में देखो लिखो, it is a pyramidal piece of glass with two triangular surfaces. देखो, this is triangle front face and back side is triangle and तीनों rectangular surfaces. Okay, so this is a prism. हम लोग डायग्राम में टेक्स्ट बुक में ऐसे देखा ना, दिस इज द डायग्राम, ट्रायंगल वन, दिस इज द फ्रंट व्यू का वी आर पुटिंग द डायग्राम. ओके, so लिखो, it is a pyramidal piece of glass with two triangular surfaces and three rectangular surfaces that refract light. इसका रे डायग्राम, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म हम लोग करने वाला है. बेटा ओके, नाउ इसका we are drawing refraction of light through a prism. We are drawing the diagram. ये आपको lab में there will be experiment also. They will show the experiment, refraction of light. Glass prism का experiment किया होगा आपको स्कूल में? Glass prism का light का कुछ किया स्कूल में? अभी तक नहीं किया. They'll put pins वगैरह लगा के they should do. Okay, and even this also they will show the spectrum वगैरह they will show. एक light डालने से spectrum आएगा ना, that one they will show. Okay, चलो. Now we'll draw the refraction of light through a prism. Okay. So this is a prism, front view I'm talking. This is a prism. Okay. Now here I'm inserting a light to the one side of the prism. Whenever you incident, you have to draw a normal. Normal line मालूम है ना? Which is perpendicular to surface. Okay. Normal line which is perpendicular to surface. ये perpendicular है थोड़ा. This is perpendicular surface. Okay. Now क्या करने वाला है? The ray of light is entering, outside is air, this is prism. इसके बाद some refractive index होगा ना, some refractive index होगा. So which is denser, which is rarer? Outside is air, inside is prism. Which one is denser medium? Air, prism. Which one is denser medium? किसका refractive index ज्यादा है? That is denser medium. So air का refractive index is always 1, which is always सबसे ज्यादा कम है. ये वाला ज्यादा है compared to air से. So this is denser medium. When a ray of light is passing from rarer to denser, what will happen? Tell me. When a ray of light is passing from rarer to denser, क्या होगा? It will move towards normal. Towards normal. ये सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा बेंड होगा towards normal. नॉर्मल इस तरफ है ना, सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा बेंड होगा. ओके, ये ऐसे जाएगा. ओके, मतलब लाइट डाल रहा है, डालने से ऐसा आपको दिखेगा ऐसा जाके. ओके, नाउ अगेन यू ड्रॉ नॉर्मल. Now tell me, when a ray of light is entering from denser to rarer, it bends Away from normal. away from. So सीधा नहीं जाएगा, away from normal जाएगा. So it will come like this. Okay, this is a refraction of light through a prism surface. Okay, here one thing, and this is called incident ray. You know that this one, incident ray. And this one is
emergent ray, right? Okay, here we have to know two terminologies we have to know. Okay, the angle between two lateral surface of a prism, this angle ko we called as angle of prism, we represent as A, angle of prism. Okay, angle between two lateral surfaces of prism is called angle of prism A. Okay, now dekho, suppose there is no prism, the light would have gone straight. If there is no prism, the light would have gone straight. So I am putting like this. Okay, but because of prism, the ray got deviated like this, right? Matlab, if I extend backwards the emergent ray, itna deviation ho, this much incident ray got deviated. See, this is actually incident ray ka path aisa hai. But because of prism, the emergent ray is coming like this. If I extend backwards, this is the deviation. Okay, we call angle of deviation. That is, we represent as capital D. So two terminologies we have to know. A is called angle of prism, and D is called angle of deviation. So whenever you draw the refraction of light through prism, we should name two terminologies, A and D. This is normal. तो इसका डेफिनेशंस भी लिख लेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डिविएशन का. कॉपीराइट. एंगल ऑफ प्रिज्म लिखो. द एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग लैटरल सरफेसेस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे का इफ दोनों का बीच का एंगल इज नथिंग बट एंगल ऑफ डिविएशन. We represent an angle of division as capital D. This is capital A. Done. Chalo. Now we'll go for dispersion. Okay, dispersion. So now the name dispersion. Okay. What is the meaning of dispersion means? Dispersion. सुना है प्रिज्म में डिस्पर्शन बोल के? नहीं? चलो. The splitting of light into its constituent colors is called dispersion. Okay, splitting of light into its constituent colors. अगर मैं प्रिज्म से white light डालूंगा, split होगा ना, वो splitting phenomenon को we call as dispersion. And spectrum means the band of 7 colors obtained during dispersion.
of white light is called spectrum. ये तो सुनोगे ना, the band of colors obtained during the dispersion phenomenon of when I pass white light through a prism is called spectrum. देखो, white light pass किया in a prism, I got 7 colors. This one actually you have to check in lab में कंपल्सरी लेके सन में रखे तो आपको कितना अच्छा दिखेगा. यू सॉ इट एनी टाइम पहला केला होगा ना, कितना अच्छा दिखेगा. ऐसा वी कैन कैच, ऐसे पकड़ सकते हैं. कलर्स पूरा आएगा, विबज्योर कलर्स आएगा. शॉर्टकट का एक्रोनिम क्या है? विबज्योर बोलते हैं. याद है ना, विबज्योर मींस मालूम है ना, वायलेट वगैरह, रेनबो कलर बोलते हैं ना. ओके, this band of colors को we called as spectrum, and the splitting phenomenon को we call as dispersion. Splitting phenomenon. Sometimes they'll give the, they'll put the blank here in the diagram में, board exam diagrams में they'll put which color is here, which color is here. People will observe, सोचेगा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो लगेगा, डाउट लगेगा. नीचे will be the violet, नीचे से ऊपर जाएगा violet. Okay, so violet is more deviated color is which one? Red, violet, more deviated color in white light में. देखो, more deviation is violet, least deviation is red. Okay, done ना, copy. Yeah, no, हो गया श्रीनिधि, डन, कॉपीड. लिख रहे हैं. हाँ, ओके, चलो. Now, angle of deviation is inversely proportional to wavelength. You have to understand this one. Angle of deviation is inverse relation with wavelength. Inverse relation means एक बढ़ेगा, other will be coming down. One decreasing means other will be increasing. Inverse relation means. Okay. So what is meaning of wavelength? Wavelength means, we studied in the 9th also, right? Wavelength, sound wave, wavelength. See, red का if I see, wavelength का कैसा रहेगा? Suppose if I draw a graph, मतलब ऐसा, the red light will be like this, ऐसा, suppose. Okay, the distance between two crusts is called wavelength, or distance between two troughs is called wavelength, right? We represent as lambda. This symbol is called lambda, wavelength का symbol. सुना होगा ना, शॉर्ट में भी किया ना. हाँ, this is the red का. violet का if I see, इसका लाइट का कैसा रहेगा मालूम है? ऐसा रहेगा. The least wavelength, सबसे least wavelength is violet. Since it is inverse relation, wavelength least है तो deviation is more. That's why violet will be bending more. Okay, and red has most wavelength. इतना बड़ा wavelength is there. The distance is more, right? That's why least deviation. That's why ऊपर red आएगा, नीचे violet आएगा. Okay, this is the reason they should say. Covered. So angle of deviation is always inversely proportional to wavelength. So एक एक color का एक एक wavelength होगा. That's why एक एक deviation हो रहा है when I pass from light through the prism. Okay. So red is least deviated color, and violet is most deviated color, as is having the smallest wavelength in the visible spectrum. This is having the largest wavelength, and this is having the smallest wavelength. That's why most deviated, least deviated. So इधर लाइट लिख लो.
दैट्स व्हाई नीचे वॉयलेट है, ऊपर रेड है. इसमें वे ऑफ राइटिंग शुड बी गुड टेक्निकल वर्ड्स में वी हैव टू यूज. ओके, हो गया. चलो, now tell me answer. Why spectrum is formed when white light is passed through the glass prism? Tell me, spectrum means band of colors क्यों form हुआ? Because of how to write? Tell me. English words I will see, technical words I will see. हाँ, बावन. You will tell. Nice, right? बोलो. Why spectrum is formed when white light is passed through a glass prism? Uh, Okay. no, Viraj. sir. Viraj, you can tell. Okay. Abhiram? No? सभी आपको ऑडियो क्या करें. ओके, एनीबॉडी? आद्या, रीजन बोल. Not sure, sir. नो प्रॉब्लम, व्हाट एवर यू नो टेल मी. व्हाई इट इज बेंडिंग ऑन वीडियो मींस नहीं, वीडियो ऑन नहीं करते, ऑलवेज ऑफ करते हैं. हाँ, वेट, आप लास्ट लास्ट मिल गयो. बोल आद्या. Why the spectrum, why band of colors are coming? Use the concept of wavelength and angle of deviation concept use करके बोलो. So I'm not sure how to format. ओके, चलो नथिंग बोलो. नॉट श्योर, वो भी ठीक है. दैट्स व्हाई आंसर थोड़ा लिखने का. देखो, ईच कलर हैज ए डेफिनेट वेवलेंथ. सेम एक्सप्रेशन ओनली. ईच कलर हैज डेफिनेट वेवलेंथ and each wavelength of the angle of deviation differs. We should tell always in terms of wavelength and angle of deviation. I told you red has most wavelength, that's where least deviation, and violet has least wavelength, that's where most deviation. Way of writing is important. Red is the least deviated and violet is the most deviated color, so different colors deviate at different angles to form spectrum. लिखो आंसर्स लिखना, इसमें मार्क्स इसी में जाएगा. पीपल को कॉन्सेप्ट मालूम है क्यों है, बट लर्न लिखने समय 1 वर्ड लिखेगा, 2 वर्ड्स लिखेगा, थोड़ा अच्छे से लिखने का. क्या लिख लो. ईच कलर हैज ए डेफिनेट वेवलेंथ and for each wavelength the angle of deviation differs. You're not there in Hyderabad, Adya? Sir, I'm in Hyderabad. Amari, why you are upping videos always? Why? भाई नेट नहीं है क्या? नहीं तो बार बार क्या हुआ? If you want to eat, you tell me, 5 minutes I'll give you. Eat, no problem.
हो गया, डन, ओके। हाँ, नाउ recombination of spectrum of white light, recombination of spectrum of white light. देखो, who has told that white light is made up of 7 colors? Newton. Huh? Newton. Newton, good. Newton has told. Okay, Newton has done. See, एक दिन न्यूटन सो रहा था आफ्टरनून में, विलेज पीपल केम, सो मेनी पीपल, टक टक टक, डोर डोर नॉक किया, क्या हुआ बोल के, वो तो समथिंग इज देयर इनसाइड, दे ब्रॉट द प्रिज्म, समथिंग इज देयर इनसाइड, दैट्स व्हाई देखो लाइट, सनलाइट से पास करने से कलर्स आ रहे, दिख रहे हैं आपको, देखकर वो लोग विलेज पीपल आर शोइंग कलर्स, लाइट इज कमिंग एंड द कलर्स आर कमिंग, मतलब समथिंग इज देयर इनसाइड बोल तो न्यूटन ने बोला ठीक है मुझे दे दो, आई विल डू एंड रिसर्च करके करूंगा बोल के ये स्टार्टेड, उनका कुछ काम नहीं है ना, वो ये है, पूरा रिसर्च करके ये करके वो एक्सपेरिमेंट करके फाइनली ही कंक्लूडेड बट बड़ा थिंग्स, सो मेनी थिंग्स ही कंक्लूडेड। ओके, सो व्हाट ही डन इनिशियली, ही टुक अ प्रिज्म एंड ही पास अ व्हाइट लाइट एंड वी गॉट अ स्पेक्ट्रम, राइट, ऐसा स्पेक्ट्रम आया, ऑब्जर्व, ओके ठीक है। अगर इनसाइड कुछ होगा तो सपोज ही पुट ए सिमिलर सेम डायरेक्शन में वन मोर प्रिज्म ही पुट, one more prism he put, but he observed that nothing is happening. अगर कुछ inside कुछ होगा तो this light also should split, right, this light also should split, this light also should split, but that is not happening, मतलब he understood that inside कुछ भी नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई भूत नहीं है। okay, now what he done, he done the prism ulta, he put the prism, one more prism ulta, ऐसा लगा। सो कलर्स जो है ना, सो क्या हुआ, एंड ही पुट अ स्क्रीन, ही ऑब्जर्व दैट ऑल कलर्स आर फॉर्मिंग a white light again, white light I'm passing, colors I'm splitting here, observe again, I put the prism ulta, he observed that again all combined to form white light. From this he understood that our white light is made up of 7 colors, and olden days में he don't know why the colors are coming, or rainbow colors are coming, पता नहीं, but from this he got the idea that okay, white light, sun is made up of 7 colors, उसमें different colors are there बोल के वो he compared with the rainbow and he only explained about rainbow phenomenon. okay, so इसके बारे में डिटेल में करना पड़ेगा, so diagram is the one, this one. So he put a prism like this and he put a ulta prism, so क्या हुआ, white light पास किया, so विब्जर आया, अगेन उल्टा प्रिज्म लगाया ना, so recombine होके we got a white light, खत्म। this is called recombination of spectrum of white light. एग्जाम में डायरेक्टली दे विल टेल recombination of white light का एक्सप्लेन करो, और न्यूटन एक्सपेरिमेंट बोलो बोल के बोलेगा ऐसा। ओके, सो डायग्राम इंपॉर्टेंट, डायग्राम ड्रॉ करने का एंड इसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। आपका राइटिंग देखो नतिक, डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करेगा देखो, ऑल विल सी नीटली कैसे कर रहे हैं। So it's kind of rough. I don't do it like properly. No exam time I do it properly. ओके, चलो हो गया। सो इसका एक्सप्लेनेशन तो लिखना पड़ेगा, 3 मार्क क्वेश्चन विल बी देयर, थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको लिखने का, लिखेंगे। ओके, देखो, आइजैक न्यूटन वाज फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्टेप बाय स्टेप लिखो आराम से।
So he's the first person to identify the spectrum of sunlight. So he tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. First, initially, he placed the same direction में, but again the colors are not getting splitted. Okay. Then he then placed the second identical prism in an inverted position with respect to first prism. Then क्या किया? Inverted position में रखा. ये 3 मार्क क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, नहीं तो क्या करेगा? 1 लाइन में लिख देगा, प्रॉब्लम हो जाएगा. So way of writing is important. उस पे लिखो बार बार. This allows all the colors of the spectrum to pass through the second prism. That जो भी स्प्लिट हुआ ना, वो पूरा सेकंड प्रिज्म में पास किया. देन क्या होगा? रिकम्बाइन होके इट फॉर्म्स ए व्हाइट लाइट. Last 2 points. Okay. Sir, I'm done writing. Can I leave? ए रुको, व्हाट विल डू 1 मिनट में? क्या है? अदर क्लासेस जरा. I'll have my dinner, sir. ये सब लोग, हम लोग भी नहीं, क्या डिनर है? रुको, ऑलवेज भागना पड़ रहा है. हाँ, नेक्स्ट लिखो. He found a beam of light emerging from the other side of the second prism. This observation gave the Newton idea sunlight is made up of 7 colors. खत्म. लिखो. One more class में complete chapter done. Human and colorful world. But next में maths करने वाला है. We are doing